कि रुकें? देखिए, आप जो यूनिवर्सिटी स्कीम अनाउंस की है, अगर आप इनका देखें तो 10 पैसे पर मंथ के हिसाब से जो है अनाउंस एप्रिसिएशन, उसके हिसाब से आप देखिए कि मिनिमम उनको 12% का रिटर्न करता है, और अगर वो 10 पैसे के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं तो मेरे ख्याल में अगर somebody needs money, the damage is already over. आपको अगर शादी करनी है, घर बनाना है, या किसी भी कारण से आपको पैसा चाहिए फिर से निकाला जा सकता है, अदरवाइज मेरे ख्याल में थोड़ा वेट करना अच्छा रहेगा। अय्यर साहब, पहले मनमोहन सिंह जी ने और बाद में यशवंत सिन्हा जी ने ये सलाह दी थी इन्वेस्टर्स को कि म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको म्यूचुअल फंड की ओर जाना चाहिए। विशाल बख्शी ने, विजय मेहता ने तो तीनों ऑप्शन बता दिए, लेकिन ये एक अच्छे ज़हीन लोग, समझदार लोग जो कि इसको समझते हैं, उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड को आप प्रेफरेंस दीजिए, एक सलाह दी साथ में। आप एज एन इन्वेस्टर आपने क्या किया है कि आपने म्यूचुअल फंड की ज्यादा अपना रुझान रखा है कि आपने थोड़ा बहुत खेला भी है मार्केट में? जैसे कहा गया, ये रिस्क लेना उनको चाहिए जो हायर रिटर्न चाहते हैं। जो फिक्सेड इनकम लोग हैं, जिनको फिक्सेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से सैटिस्फाई हो जाएंगे, उनके लिए तो म्यूचुअल फंड से कोई प्रॉब्लम है। आप नहीं तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्ट किया है, और मार्केट में गैम्बल करने का जिसको कहते हैं वो नहीं किया, कम कुछ तो शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ा फोर्स मिस्टेक ना बता। इफ यू नो द इकोनॉमी, यू नो हाउ द इंडस्ट्री इज बिहेविंग, यू विल बी एबल टू सेलेक्ट दोज कंपनीज वेयर यू आर लाइकली टू गेट ए फेयर अमाउंट ऑफ रिटर्न। देयर आर बेसिक कंपनीज वेयर सर्टेन गिविंग ए फेयर अमाउंट ऑफ रिटर्न। ऐसे कोई खास ये तो नहीं हुआ है दैट इफ यू टेक माई कॉन्फिडेंस इन आइदर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज और इन म्यूचुअल फंड। जी विशाल, एक सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कागज पर इन्वेस्टमेंट करना एक दिन शुरू किया खेल के नाते। उनका कि मैंने शेयर का दाम देखा, मैंने कहा कि ये वाला शेयर मैंने खरीद लिया। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ये दाम है, चलो मैंने बेच दिया। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से खरीदा, फिर से बेचा। तो कागज पर जब उन्होंने जमा घटा किया तो उन्होंने करीब 5 लाख रुपए कमा लिए। फिर जब वास्तव में उन्होंने कहा कि जब मैं इतना पैसा कमा ही सकता हूँ, इतना अतिमंद हूँ ही, तो उन्होंने वास्तव में उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया शेयर्स में, और उसी तरीके से उन्होंने लगाया, उसी समझ से लगाया, लेकिन वास्तव में जब नतीजा आया तो उन्होंने 5 लाख रुपए गंवा दिए थे। तो पहली चीज तो ये है कि हम क्यों कमाते हैं, क्यों गंवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, मतलब हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम पैसा खो जाते हैं? देखिए, ये कहना कि आप अच्छी कंपनी में आप जब भी लगाएंगे आप पैसा कमाएंगे, ये भी गलत बात है। आपको ये देखना है कि किस समय पे आप लगा रहे हैं। इन्फोसिस के शेयर का दाम 10,000, 11,000, 12,000 भी है, बहुत अच्छी कंपनी रही, और उसी का दाम नीचे भी है। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रॉफिट उसके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन रेट नीचे गिर गया है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऑपरेटर्स और कुछ स्पेकुलेटर जब शेयर के दाम खींचना ऊपर शुरू करते हैं तो वो फिर जेन्युइन नहीं रहता है, वो एक आर्टिफिशियल हाई होता है। तो हम जैसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी से बाहर आकर मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो अभी समय ये है कि इन्वेस्टर को अपने आंख और कान खोलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये देखना है कि मार्केट की हालत क्या है। अखबारों में सब आता है, लोग कहते हैं कि मार्केट ओवर हीटेड है या नहीं है, कुछ लोगों से बात करनी चाहिए, और ये नहीं कि किसी ने कहा आप ये ले लीजिए तो आप ये ले लीजिए। थोड़ा अपना अभी स्टडी कर मार्केट में इन्वेस्ट करना, और ये देखना कि आप किस टाइम एंटर कर रहे हैं और किस टाइम एग्जिट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको बैंक में 12% इंटरेस्ट या 11% इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है, और कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में आपको 14% मिल रहा है, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से एनुअल रिटर्न 24%, 20% या 25% का मिल रहा है, तो आपको बहुत खुश रहना चाहिए। पैसा हमेशा आदमी वहां पर गवाता है जहां पर लालच आते जाते हैं कि अब मेरा रिटर्न, मैंने ये शेयर 100 में लिया था, 120 हो गया, एक महीने में आपको 20% आ रहा है, आप कहेंगे नहीं अब मैं इसको 130 में बेचूंगा, वो 130 होगा, आप कहेंगे नहीं अब मैं 140 में बेचूंगा। ये जो लालच में आदमी जाता है वो एक ऐसा व्यू चक्र हो जाता है कि जब वो शेयर का दाम नीचे गिरता है उस टाइम आदमी कहते नहीं अभी ये ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली वो फिर लॉस में रहता है। जी, इसका
अगला सवाल ये आपसे कि विदेश में जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो किस तरह की स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसका बिहेवियर कैसा है? देखिए, विदेश में जो लोग स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाती है, एंड दे हैव गॉट पेंशन फंड एंड दे हैव गॉट, बट बेसिकली अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर 4000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है और इंडिया के अंदर अभी 40 भी नहीं है, मेरा 10 या 12 है या 20 से नीचे जाया ज्यादा। तो वहां पर जो है वो मार्केट एक बहुत बड़ी होने की वजह से तो उसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। आज आप 5 लाख शेयर भी किसी कंपनी में बेचना चाहिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तो जल्दी से दिखते हैं, यहाँ पे इतनी जल्दी से नहीं दिखते। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो अभी विशाल ने कही उसके एक्सटेंशन में ही, कि जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है प्राइमरली ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रूल है कि आइदर यू लूज बिकॉज ऑफ फियर और यू लूज बिकॉज ऑफ ग्रीड। तो जो आपने मिस्टर शर्मा का भी एग्जाम्पल दिया, जब उन्होंने अपना लूज किया, आप पेपर के ऊपर कर रहे हैं तो सबकी बड़ी अच्छी है, इसीलिए म्यूचुअल फंड क्यों मरे कि म्यूचुअल फंड का अपना पैसा नहीं रहा, उन्होंने पब्लिक से सभी दिया हुआ था। और वो जो है वो उससे लेकिन जब आप एक्चुअली मार्केट के अंदर उतरते हैं, जब आप मैदान में उतरते हैं, उस समय जब आपका पैसा डेप्रिशिएट हो रहा होता है तो आप घबरा जाते हैं। और ये जैसे ग्रीड बहुत खराब है ऐसे ही फियर बहुत खराब है। अगर आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करके, और एक बात जो है विशाल ने कही, मैं उस पर पूरा एग्री करता हूं कि टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर आप तीनों चीजों पे थोड़ी देर के लिए स्टडी करके समझना शुरू कर दें एंड यू इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी, आई थिंक दैट यू कैन नॉट लूज, यू विल नेवर लूज मनी, बिकॉज हमने देखा है इतनी देर से शेयर मार्केट के अंदर, मुझे दुनिया भर में तो शेयर मार्केट पे ये दिस द मोस्ट प्रेफर्ड एंड मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें छोटा इन्वेस्टर जा भी सकता है, 10,000 रुपये लेके भी जा सकता है और जब चाहे 3, 4, 5 दिन में अपना पैसा वापस देकर भी बाहर निकल सकता है। जी, तो विशाल आपसे ये सवाल कि आपको आज की अपनी इकोनॉमी की हालत देखते हुए क्या लगता है कि ये इकोनॉमी कब तक रिवाइव करेगी, शेयर मार्केट कब तक रिवाइव करेगा, और अगली बार अगर शेयर मार्केट रिवाइव करता है तो कितना भरोसा होगा लोगों को और कितना जमीन होगा वो भरोसा? देखिए, इकोनॉमी रिवाइवल का जहां तक प्रश्न है उसमें सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी पॉलिसी सही रखें तो हमारी इकोनॉमी में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो जिसमें जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जो कंपनियां नहीं आ रही है, निजीकरण नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत असर हुआ है और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी असर हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये सोचना कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों की खेलने की जगह है और सिर्फ उसमें एक आम आदमी को क्या लेना देना है उससे, ये भी बहुत गलत बात सोचने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट का जो जैसे इंग्लिश में कहते हैं रिपल इफेक्ट बहुत होता है। एक हेल्दी स्टॉक मार्केट होगी तो आप देखेंगे कि इकोनॉमी भी हेल्दी होगी। अगर आपका स्टॉक मार्केट बहुत देर तक हेल्दी नहीं रहेगा और बहुत वीक रहेगा तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे होगा। ये हमने देखा कि जिस बार का बजट आया तो सबने कहा बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है, और स्टॉक मार्केट एकदम उठा 2-3 दिन, उसके बाद स्टॉक मार्केट एकदम गिरा। और आज हर कोई कह रहा है कि इकोनॉमी धीरे हो गई है, इकोनॉमी चल नहीं रही है, इकोनॉमी रुक गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट में डिप्रेशन आया है उसकी वजह से ये एक मूड बना है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर रहता और अच्छा रहता तो हर कोई कहता देखिए सब कुछ ठीक है। एक और जगह जहाँ डिप्रेशन आया है वो है रियल एस्टेट में। प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टर पैसा लगाते रहे हैं पिछले कई साल से, कि जैसे पहले गोल्ड में लगाते थे, बाद में फिर प्रॉपर्टी का एक फैशन हुआ था उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टीज का दाम गिरता जा रहा है। ये डिप्रेशन क्यों है? पहले ही जो हाई था वही आर्टिफिशियल था कि कोई और कारण है? नहीं, देखिए, जब एक इकोनॉमी बूम कंडीशन में चलती है तो आज एक आदमी जो पैसे बनाता है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि अपना घर बनाना चाहता है। तो रियल एस्टेट जो है ये एकदम स्ट्रेट वे उसके कारण जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो रियल एस्टेट में तो गए, लेकिन वो स्पेकुलेटिव टेंडेंसी से गए कि आज उन्होंने जो चीज लिया उसमें रहना नहीं है, उसको थोड़ी देर बाद एक प्रॉफिट में दे देना है।
ये जो एक स्नो बॉल इफेक्ट होता चला गया, इसके कारण रियल एस्टेट के दाम ऊपर चलते चले। लेकिन जब इकॉनमी थोड़ी सी स्लो डाउन शुरू हुई तो इन्वेस्टर ने रियल एस्टेट से अपना पैसा निकालना शुरू किया। तो जो रियल यूजर था वो लिमिटेड था। आज अगर आपने 10 लाख फ्लैट बना दिए या घर बना दिए तो एक्चुअल डिमांड तो सिर्फ 1 या 1.5 लाख की थी। तो वो बाकी जो है वो अभी फिर रुकने से उनके रेट से है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पोजीशन वहीं पे आ गई। अब अगर हमें किसी भी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, आप देखिए अगर आप पुरानी अपनी जो लोक कथाएं सुने तो राजस्थान में अकाल पड़ता हुआ, वो राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े पैलेसेस बने हैं वो राजा उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते थे ताकि जो लोग हैं वो एक तो एम्प्लॉयड हो जाते थे, दूसरा उनको पैसा सर्कुलेशन में आ जाता था। अजय साहब, भारत में क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं है रिटायरमेंट के बाद, तकरीबन नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है लोग ज्यादातर उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने क्या टेंडेंसी ऑब्जर्व की है कि क्या इस बीच में, क्योंकि ये उथल पुथल हुई मार्केट के अंदर, क्या लोग डेड इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा रुझान रखने लग गए हैं कि गोल्ड खरीद लिया जो कि पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से कि फिर मार्केट में पैसे की मौजूदगी कम हो जाती है, जो कि विजय चाहते हैं कि हो? अब तक का जो इंडिकेशन है मेरे ख्याल से वो गोल्ड में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है जितना हो सकता है। मतलब if people want to make debt investment, the demand for gold would have gone up. There are no indications, either from the imported gold or from the smuggling figures that we see, that the gold demand has not gone up to that extent. That means that people are not making debt investment. Probably they are still continuing the type of investment. थोड़ा सा अभी रुका तो पड़ा हुआ है, लेकिन I think by the time the economy itself revives, the old investment pattern will come back and there will be business as usual. बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। split take place. So that's where the heterogeneity is there. भाई भाई न्यारे तो होते ही हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। Is the third split imminent or will it take some time? In their minds it might have taken place, but it will take some time before it is really given a concrete shape. The bone of contention once again is the flagship company Modi Rubber having a turnover of 450 crores and the family's new acquisition Bombay Tires showing a turnover of 200 crores. We are working on. The only thing which BK Modi has said is that we must divide it in the ratio on which 60 to 60-40. Now, if we take that into consideration, then again it means that out of a turnover of roughly about 800 crores, what they are talking is that they should get, BK, SK and UK, they should get about, say, close to 450, 500 crore turnover company. So this is what BK is saying, 60-40. Yeah. And this is BK's formula. Yeah. That you let us have this Yeah. and split Modi Rubber. Yeah, yeah. But what is KK and what is VK's opinion on this? I feel that other side is of the opinion that even the projects which are in the pipeline and in which the investments have already taken place, they should also be considered. If there has to be a division, let it be 20% each. Let there be 5-20%. So in that, there is a lot of difference. What is the difference between 60-40 and 20-20-20-20? Because if they make it 20-20-20, then it is very difficult to divide Modi Rubber. Though discontent was simmering for long, what provoked the younger brothers was VK Modi's action in quietly nominating his newly married son Alok to the board of directors of Bombay Tires. SK, who had his eyes on the job, was taken by surprise. You see, when there is mistrust, then these things take place. And that is why there are separations in the families.
through financial institutions, owns 51% in Modi Rubber, both factions need its support. It's part of the game. Would have to. With the appointment of VK Modi as the chairman of the management committee, maybe with the majority of the institutions are there, and then they have accepted his chairmanship, so probably they have hinted in that direction. That they are with VK. So far as Modi Rubber is concerned. And also, when VK nominated his son as a director in Bombay Tires, it must have been with the blessings of the financial institutions. Should be. Since neither of the two earlier splits have been either smooth or satisfactory, what will be the fate of this one? Well, no break could be to everybody's satisfaction, and I think the last time somebody commented that because the break was not to the satisfaction of both, then it is a good break. If it is to the satisfaction of one, then there is something wrong. The stock markets are languishing. The BSE index is struggling to maintain itself at 2,500 points, which is almost half of what it was 8 months ago when Big Bull Vijay Mehta was riding the crest of his popularity. But does this mean people are no longer investing in stocks and shares? No, absolutely not. So where is this money? Over 6,500 crore rupees has been picked up in public and rights issues over the past 4 months, and another 2,000 crore rupee is almost certain to be picked up over the next 2 months, setting a scorching pace for the primary market in India, even though the secondary market is languishing and in deep trouble. Fiscal Fitness looks at the capital market scenario. Investors may have fled the stock exchanges, but they're not hiding. They're right there in the open, crowding the primary market, scanning each and every public issue and putting their collective savings in Indian industry. The process started sometime after the budget and when the stock market was at the peak. So after that they all started planning, and the result of that we are seeing now in November, December and onward. According to me, we will have to create a set of norms as to what extent a company should charge a premium, and that should be looked into by SEBI before they clear a prospectus. The Securities and Exchange Board of India has wised up now and has asked companies to mention in their prospectus what the premium would have been under CCI rules. But as far as new promoters and their projects go, the investor has to go solely on the information in the prospectus and is sometimes fooled because of exaggerated or false claims. Should the government bring back CCI guidelines? Boggling sums from the common man. The number of investors have increased so many fold that today even if somebody is looking for a public issue of say 300-400 crore, the kind of investor he is looking for is just about 3-4 lakhs. So those kind of multiplication in the number of investors, that is bringing the money to a good proportion. We have received underwriting offers for more than 500 issues. So naturally, if they have yet to come to the market, I feel that 1993 should see the same trend. On a single day on November 16th, 1992, as many as 36 companies entered the market to raise some 500 crore rupees, which should be some sort of a world record, but an indicator surely that the primary market has come of age in India.